Now, see, so today we are going to start with the chapter power sharing. First of all, let's discuss what do we mean by power sharing. Okay, power sharing होता क्या है, जिसमें हम पावर डिवाइड करेंगे, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. सपोज जैसे फैमिली में भी होता है, इट इज डिवाइडेड कि कुछ डिसीजंस, जैसे सपोज इफ यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, तो ये देखते हैं कि कौन कौन सी जगह अच्छी घूमने वाली है, बच्चों को दे दिया जाता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. फिर फंडिंग कितनी लगेगी ये फादर देख लेते हैं सपोज. फिर लेके क्या क्या जाना है, शॉपिंग क्या क्या करनी है, वहां से ये मम्मा को देती रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ऐसे करके द थिंग्स आर डिवाइडेड. इन द सेम वे कंट्री में भी थिंग्स आर गेटिंग डिवाइडेड. किस तरह से, ये ऐसे भी डिवीजन हो सकता है कि एक कुछ काम सेंटर के पास रहेंगे. Some decisions will be taken by the central government, union, and some will be taken by the state government, and some can be taken at the local level. ठीक है. Other way to divide the power, other way can be that one body is making the laws, that is legislature, right. Other body is executing the laws, that is executive, and the third body is implement, or you can say checking whether the laws are correctly implemented or not, and that is judiciary. Fine. इस तरह से there can be many ways जहां पे power divide हो सकता है. Clear? Now let's start with the chapter. I'll read each and every line जिससे you'll clear कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, and highlight whatever is important for your board's exam. Now in the chapter we resume the tour of democracy. अच्छा, now I have a doubt in this term. What do you mean by the term democracy? Democracy means rule of the people. How rule of the people? Means people will elect their representative who will make laws for us. Okay. Now, in democracy, all power does not rest with any one organ of the government. It is getting divided. कुछ पावर किसी के साथ है, कुछ पावर किसी को allocate किया गया है. Okay. An intelligent sharing of power among legislative, executive, and judiciary is very important to the design of democracy. Means एक बॉडी के हाथ में पावर नहीं होना चाहिए जिससे एक्सप्लॉइटेशन ना हो, एंड देयर शुड बी चेक इन बैलेंसेस आल्सो. मींस सपोज देयर इज अ लॉ व्हिच वाज मेड बाय लेजिस्लेचर, बट later on it was realized that the law was not good. The judiciary can keep a check and cancel that law. Okay. In this and the next two chapters, we can carry this idea of power sharing forward. Now we'll start with two stories here from Belgium and Sri Lanka. We will see, we know how the power is distributed in India, right? But here in this chapter, we'll see कि Belgium में कैसे power share हुआ था कि people were very happy. Okay, although there were several communities living there. और श्रीलंका में कैसे पावर शेयर हुआ था, that this led to civil war there. फाइट हो गई वहां पे. अगेन वहां पे डिफरेंट कम्युनिटी थी, but the thing is that at one place there was peace, at the other place there was fight. तो वो we have to see, and this will help us to understand the demand for power sharing. कि पावर शेयरिंग क्यों करें, मतलब ना करें तो क्या होगा. That will tell you the essence of the chapter. Okay, and this will tell you the need for power sharing in democracy. Now let's start with the story of Belgium. पहले we'll study about Belgium. Belgium का पूरा पढ़ लेंगे, then we'll start with Sri Lanka. Okay. अच्छा, यहाँ पे there's a cartoon over here which states that sharing power is equal to dividing power, and dividing power is equal to weakening the country. Do you agree with this? बताओ. No, it doesn't mean dividing means weakening. This means we are empowering each one, or you can say the different people, to take the decisions at different places. अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग डिसीजंस ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बातें कर सकते हैं. गेटिंग, कोई एक मेजॉरिटी में है या कोई एक ग्रुप बाकियों को डोमिनेट नहीं कर सकता. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ बेल्जियम. So Belgium is a small country in Europe, smaller than the
area than the state of Haryana. If we see, there's a state Haryana which borders our Delhi only. तो हरियाणा से भी छोटी एक कंट्री है in Europe, that is called Belgium. And you should remember the countries with which it shares its border: France, Netherlands, Germany, Luxembourg. Okay. The population of over 1 crore, and that is again half the population of Haryana. हरियाणा से छोटी है, हरियाणा से कम है population यहाँ की. Okay. The ethnic composition is very complex. What do you mean by ethnic composition? Ethnic composition means कौन कौन सी community यहाँ पे रहती है. Clear? So ethnic composition is very important. Understand it carefully. 59% Flemish are there. They live in the Flemish region and speaks Dutch. Remember. Now there are 40% who live in Wallonia. They live in Wallonia region and speak French. 59 plus 40, that is 99. Now remaining 1%. They speak German. अब ये है, याद रखना, this is the composition of Belgium. ठीक है. अब आ जाओ कैपिटल पे. ठीक है. What is its capital? Brussels. City Brussels. यहाँ पे क्या है, उल्टा हिसाब किताब है. Here 80% speak French, 20% speak Dutch. तो कुछ कोरिलेशन सा दिखा. बेल्जियम में only 40% speak French. तो माइनॉरिटी कौन है? फ्रेंच. और कैपिटल में मेजॉरिटी है फ्रेंच, 80% है. राइट. While if we see the other side, the Dutch speaking, they are 59% in Belgium, while only 20% in the capital. So at least you can make some checks and balances, right? अब ये तो हमने पढ़ा क्या है, ethnic composition. Clear? और differences देखते हैं अभी इनमें. Other differences were minority French speaking community. Where was French in minority? Tell me, Isha. French minority में. Ma'am, Belgium. हाँ, so that was relatively rich and powerful. Okay. This was resented by Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. अब यहाँ पे जो Dutch speaking people थे, इनको benefit मिला बाद में, तो इसलिए they were not so educated or they were not so rich at that time the way French was. Clear? Excuse me, ma'am. Ma'am, I just had a doubt. Ma'am, here minority refers to the people living in Belgium or in Brussels. Belgium, not Brussels. Okay, ma'am. Okay. अब इसकी वजह से अब एक रिच है कम्युनिटी, एक पुअर है, ऑल्दो वो माइनॉरिटी में है फिर भी रिच है, और वो मेजॉरिटी में है फिर भी पुअर है, तो प्रॉब्लम तो होगी, टेंशन तो होगा. अब टेंशन हुआ इससे, tensions between Dutch speaking and French speaking communities, and this tension was more acute in Brussels, क्योंकि Brussels में एक special problem है, and the problem was Dutch speaking were in majority but minority in the capital. Okay. Now minority in the capital, underline it. I hope you have understood the story of Belgium. अच्छे से पूरा समझ आ गया कि यहाँ ये कहाँ पे है, what is the location, to which areas it shares its borders, and the second one is what is the ethnic composition in the country and what is the ethnic composition in the capital. ठीक है. This is the story of Belgium. Once we'll study Sri Lanka, then I'll give you certain questions. Okay. Now study about Sri Lanka. Here is Sri Lanka. तो अब श्रीलंका की बात करते हैं.
Sri Lanka is an island nation. As we know, India say it is at the southern coast, few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. It has the same population as Haryana, around 2 crore. अब यहाँ पे भी डाइवर्सिटी है, it has diverse population. Now, listen carefully the ethnic composition of Sri Lanka. Sinhala speakers 74%. Okay. Tamil speakers 18%. So who is in majority? Sinhala. And minority Tamil speakers. Now Tamil में भी there are two categories. एक है Tamil native जो वहीं के थे. Okay. So I'll just highlight it with the different color. There are two subgroups. Tamil natives called Sri Lankan Tamils, and they were 13%. And the rest. Actually, during colonial rule, India से काफी लोगों को श्रीलंका लेके जाया गया था. Why? For the plantation works. Workers की नीड होती थी, कहीं से कहीं लेके जाते थे. जैसे we have seen slave trade होता था यूरोप में, ऐसे यहाँ पे भी प्लांटेशन के लिए इंडिया से लोग वहां लेके जाते थे. तो जो इंडिया से तमिल्स वहां लेके गए, जो इंडिया के लोग थे, बेसिकली दे वर कॉल्ड इंडियन तमिल्स, whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period. तो अगर 13% श्रीलंकन तमिल्स है तो रिमेनिंग इंडियन तमिल्स कितने हुए, जल्दी से बताओ. मैम पहले मैम उन्हें इंक्लूड करना है जो 74 और 18. नहीं देखो, द थिंग इज दैट यहाँ पे ऐसे है 74 प्लस 18 कितने हो गए? 92%. यस मैम. एंड 13. अगर ये देखो, ये तो 105 हो जाएंगे. तो ये अलग क्लासिफिकेशन नहीं है, ये इस तरह से है 74% who are they? Sinhala. And 18 were Tamil speakers. Tamil. अब इस 18 में भी 18 का मैं फर्दर डिवाइड करूं तो 13% of 18 these were श्रीलंकन तमिल्स जो नेटिव थे, and remaining 87% of 18 these were Indian Tamils. तो तमिल्स में ये अगर हम देखेंगे तो मेजॉरिटी वाज इंडियन तमिल्स. ठीक है. वैसे ओवरऑल मेजॉरिटी में देखेंगे तो सिन्हालास मेजॉरिटी में थे, तमिल माइनॉरिटी में थे. और तमिल की कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तो श्रीलंकन माइनॉरिटी थे, इंडियन तमिल्स मेजॉरिटी में थे. क्लियर? कोई भी डाउट है कहीं भी? नहीं? ओके. नाउ श्रीलंकन तमिल्स are concentrated in the north and east of the country. और जो सिन्हालास थे, they were Buddhist and Tamils were Hindus और Muslims. और 7% क्रिश्चियंस थे जो दोनों तमिल और सिन्हाला थे. यहाँ पे you have seen ना, ये देखो, if I'll show you here, ये 92 है. 92 में 7% were the Christians. जो तमिल एंड बुद्धिस्ट, तमिल एंड सिन्हालास दोनों को फॉलो कर लेते थे. स्टोरी क्लियर? यस मैम. ओके. इन बेल्जियम में क्या हो सकता था? नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट. डच कम्युनिटी कुड टेक द एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी. जो डच कम्युनिटी थी एडवांटेज ले सकती थी कि हम मेजॉरिटी में हैं, हम बाकियों को डोमिनेट करेंगे, एंड उससे फिर कॉन्फ्लिक्ट होते, पार्टीशन भी हो सकता था, है ना. श्रीलंका में सिन्हालास की बड़ी मेजॉरिटी थी, वो भी अपने विल लगा सकते थे पूरी कंट्री पे, कर दोनों ही सकते थे, डच भी और सिन्हालास भी.
नाउ लेट्स सी किसने क्या एक्चुअल में किया. ठीक है. ईशा, एनी डाउट टिल हियर? फर्स्ट टॉपिक इज डन. ये वाली हेडिंग इज डन. बेल्जियम एंड श्रीलंका का बेसिक कॉम्पोजिशन एंड लोकेशन वी हैव डन. So we don't have any doubt till now. So now I'm going to give you certain questions on this. Okay. Where is this? Stop share.